नया दिन नई गाड़ी. दिस इज द मारुति फ्रॉन्क्स एंड आई हैव द टॉप एंड बूस्टर जेट ऑटोमेटिक वेरिएंट विद मी. क्या करेंगे हम इसको 200 किलोमीटर चलाएंगे एंड वील फाइंड आउट द रियल वर्ल्ड माइलेज ऑफ दिस कार. आई हैव फिल्ड अप द टैंक ऑफ दिस कार टू द ब्रिम एंड आई विल एक्सप्लोर गोवा सिटी में. थोड़ा चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक में भी चलाएंगे एंड एट द एंड ऑफ 200 किलोमीटर्स वील कम बैक टू द सेम फ्यूल पंप एंड फिल अप द टैंक एंड आई विल टेल यू कि गाड़ी ने कितना रियल वर्ल्ड माइलेज दिया. तो चलिए शुरू करते हैं. So I've completed the first 50 kilometers with the Maruti Fronx. Of course ये गाड़ी बलेनो पे बेस्ड है. So compared to the बलेनो ये गाड़ी 5 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है, 20 मिलीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ी है और 50 मिलीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंची है. The wheel base of both the cars is exactly the same 2520 millimeters. Now if I have to talk about the BoosterJet engine, ये वाला इंजन पहले मारुति बलेनो RS में अवेलेबल था in 2017, but people were buying the K12 variants a lot more. Even the diesel was available back in the day. तो RS की सेल्स इतनी ज़्यादा हुई नहीं. So Maruti has brought it back and it is actually a very good engine. तो K12 इंजन जो है वो बनाता है करीबन 88 हॉर्स पावर एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क, बट वो एक 4 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड. द BoosterJet इंजन इज अ 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन ये 1 लीटर इंजन है, टर्बोचार्ज्ड है एंड दिस वन मेक्स 100.06 PS ऑफ पावर एंड 147 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. मारुति ने ये इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल या फिर एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया है. द सेम टॉर्क कन्वर्टर विच इज ऑफर्ड ऑन द मारुति ब्रेजा ऑल्सो एंड इवन द अर्टिगा एंड द XL6 गेट दिस सेम ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. First impressions of the engine are quite nice. Of course, ये एक 3 cylinder engine है, तो the refinement could have been slightly better. It has this low end clatter and when the car is idling or driving at low RPMs, आपको ऐसा लगता है कि डीजल गाड़ी जा रही है. तो that outside noises, a bit audible and some of the vibrations are felt inside the cabin also. When you start going, when you cross a bit on the higher RPM range, the car feels more settled, the engine feels more settled और performance इसकी काफ़ी अच्छी है. 100 PS might seem okay on paper. ये इंजन में है थोड़ा लैग, बिलो 2000 RPM थोड़ा लैग फील होता है बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, क्योंकि द गियर बॉक्स इज अ बिट लैगी. इट इज़ नॉट लैगी एक्चुअली, इट इज़ अ बिट लेजी. तो गियर शिफ्ट करने में उसको टाइम लगता है. वो इट इज़ नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट गियर बॉक्सेस अराउंड, बट आफ्टर 2000 RPM इंजन इज़ रियली अलाइव. इंजन में मतलब अलग ही जान आ जाती है और वो गाड़ी को बढ़िया तरीके से पुल करता है. तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी. खाली वो है कि लो एंड में थोड़ा लैग फील होगा. तो अगर आप 30-40 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो तो गाड़ी हायर गियर में होगी ऑब्वियसली, तो 2000 RPM के नीचे होगी तो वहाँ पे थोड़ा लैग फील होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई हैव अबाउट द मारुति फ्रॉन्क्स. सो दिस वन द MID इज शोइंग 14.3 किलोमीटर्स पर लीटर. आउट ऑफ 50 किलोमीटर्स मैंने करीबन 30-35 किलोमीटर्स बाहर चलाई है हाईवे पे, लेकिन हाईवे पे भी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है गोवा में एंड रिमेनिंग 15 किलोमीटर्स वर डन इनसाइड द सिटी. सो इनसाइड द सिटीज इट वाज एक्चुअली शोइंग 7-8 किलोमीटर्स पर लीटर. तो मुझे लगा आज का माइलेज टेस्ट थोड़ा महंगा होने वाला है, बट इट इज शोइंग 14.3 राइट नाउ. द रेंज इज अराउंड 299 किलोमीटर्स. सो आई विल गिव यू द नेक्स्ट अपडेट एट 100 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप मीटर. कंप्लीटेड 100 किलोमीटर्स ऑन द मारुति फ्रॉन्क्स BoosterJet. 100 किलोमीटर हो गए गोवा में, जिसमें से करीबन 20-25 किलोमीटर ट्रैफिक में चली है गाड़ी. काफ़ी हैवी ट्रैफिक में भी चला है गाड़ी को एंड MID इज़ नाउ शोइंग 15.2 किलोमीटर्स पर लीटर. तो माइलेज उस पर थोड़ा बढ़ गया है पहले से एंड द रेंज हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड अ बिट, अराउंड 305 किलोमीटर्स इट इज़ शोइंग राइट नाउ. तो चलो अभी राइड एंड हैंडलिंग की बात कर लेते हैं. इंजन का तो आई गेव यू एन अपडेट इन द प्रीवियस अपडेट विच आई गेव यू. सो राइड एंड हैंडलिंग, द राइड क्वालिटी फील्स बेटर देन द बलेनो फॉर श्योर. एक्स्ट्रा जो राइड हाइट है इसकी दैट हेल्प्स ऑन बैड roads and overall on potholes also the car feels a little more composed compared to the Baleno. इसकी जो टायर साइज है वो भी काफ़ी अच्छी है. So the tires have decent levels of grip also and they suit the size and the nature of the car. तो बैड रोड्स पे वैसे राइड अच्छी है, थोड़ी और ज़्यादा प्लश होती तो अच्छा हो जाता and of course that is the only concern. A little more plushness from the ride would have been better. The steering is very neutral. It does not have a lot of feel or feedback. It feels very similar to the same steering that we have seen on other Maruti cars. So the communication from the steering to the driver is similar to the same feeling that we get from other Maruti cars. तो वहाँ पे थोड़ी feel and feedback थोड़ी better होती तो अच्छा होता.
Handling is very neutral on the car. Again, it is not an outright sharp handler. So again, neutral handling है, लेकिन गाड़ी easy to drive है. That is what most people will appreciate. Highway पे भी काफ़ी अच्छी चलती है, 100 किलोमीटर की स्पीड पे stable feel होती है. So all of these things are quite good. Talking about the speed of the mileage test, तो जब मैं गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहा हूँ, when I'm driving the car in city, I've been maintaining speeds of 20 to 35 kilometers per hour, and out on the highway, I've been maintaining 90 kilometers per hour. I have touched 100 on a couple of occasions, not going above that, and so that is what it has been like this. Car is easy to drive, people will like this nature, and the looks are also quite nice. तो आगे से ग्रैंड विटारा लगती है, पीछे से भी काफ़ी स्पोर्टी लगती है. So all these things are good. So let's get driving again. I'll give you the next update at 150 kilometers. We'll talk more about the features and the infotainment system of the car. So now I've completed 150 kilometers on the Maruti Fronx, and हम लोग गोवा में ही चला रहे कब से गाड़ी को. So after 150 kilometers, I'm actually quite familiar with the performance of the car. Interior तो इसका same Baleno वाला ही है, only the color schemes are a little different, but the feature list is the same as the Baleno, and overall you feel at home in this car. तो इसमें कुछ features काफ़ी useful है, जैसे कि the touchscreen infotainment is quite nice to use. The HUD, I'm not a big fan of that, तो मैंने तो उसको बंद करके रखा है. Instrument cluster is very clear and easy to read. The seats are nice actually. There is no leather upholstery in this car, and ये price point पे I think वो होता तो अच्छा होता. But the shape of the seat is very good, और long drive अगर आप इसमें करें, you feel pretty comfortable in this. Driving position भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और जो extra height है over the Baleno, that is actually useful. So that's what it. फीचर्स है इसमें काफ़ी अच्छे. 6 airbags you get, ABS with EBD. All these features are available. You get an auto dimming IRVM, और कैबिन की जो क्वालिटी है वो भी डिसेंट है, मतलब सेम एज द बलेनो. एसी काफ़ी ठंडा होता है ये गाड़ी का. सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट अ 360 व्यू कैमरा इन दिस कार. अगेन दैट इज़ क्वाइट यूजफुल. बहुत सारी महंगी गाड़ियों में भी ये फीचर नहीं आता. बाय द वे, कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है. यू गेट द सेम ऑडियो सिस्टम एज द बलेनो एंड द ब्रेजा 9-inch स्क्रीन. इट इज़ ईजी टू यूज़. इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर मिलते हैं. एक क्विकली गाना बजा देता हूँ. तो साउंड क्वालिटी एज यू सो इट इज़ प्रिटी डिसेंट. यू कैन प्ले अराउंड विद इक्वलाइजर टू सेट इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, बट डिसेंट है साउंड क्वालिटी. फुल वॉल्यूम पे थोड़ा वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन मीडियम वॉल्यूम पे मतलब बेसिकली इतना कुछ मेजर इशू आता है नहीं. सो मोस्ट पीपल वोंट कंप्लेन अबाउट दैट. सो दैट्स व्हाट इट. अभी वापस चलाते गाड़ी को, और 50 किलोमीटर बचे, एंड ऑफ कोर्स वील देन टेक इट टू द सेम फ्यूल पंप एंड सी द माइलेज. 200 किलोमीटर चला ली गाड़ी गोवा में, एंड माई लेग्स आर पेनिंग नाउ. इट एक्चुअली टुक 5 hours टू डू 200 kilometers हियर. नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा सब जगह घूम लिया. फाइनली वी आर हियर एंड वी फिल्ड द फ्यूल एट द सेम पंप. द कार हैज टेकन 14.08 liters of petrol, and the cost was 1378.29 rupees. So the real world mileage is, we'll calculate that, 200 divided by 14.08, and we have 14.20 kilometers per liter. The MID is showing 15.1 kilometers per liter. What is the running cost? We'll do 1378.29 divided by 200, and we have a running cost of 6.89 rupees. So it's a decent running cost. The mileage could have been better, but it was lower. Traffic बहुत ज़्यादा मिला, and the gearbox itself is lazy, so sometimes you have to rev the car a bit too much. Overall गाड़ी कैसी लगी मुझे? गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी. I like it more than the Baleno. The BoosterJet engine is nice. The gearbox is lazy. The car is comfortable. Features बहुत ज़्यादा है, तो वैसे काफ़ी decent गाड़ी है. Right now I don't know गाड़ी की प्राइस क्या है, लेकिन as far as my expectations go, Baleno से I think 1.5 lakh ज़्यादा हो सकती है इसकी प्राइस. So that's about it. What are your thoughts on the Fronx? Let me know in the comment section below.